सऊदी अरब ले लें, दुबई ले लें, इस पर स्किल्ड लेबर अगर ज़्यादातर जा रहा है पाकिस्तान, इंडिया से जा रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है, वही जाके फिर डिफरेंट स्किल्स में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर यहाँ से प्रॉपर स्किल्ड ट्रेंड लोग जाएं तो आई थिंक उनको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PakYouth पल सईद शेख के साथ एक नया एपिसोड, एक नए मेहमान के साथ। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो खासे वर्सेटाइल हैं, बहुत सी जगहों पे काम किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, लॉ में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे कि वो खुद हमें बताएं। आज की हमारी मेहमान हैं राबिया उमर। थैंक यू वेरी मच राबिया उमर, आप तशरीफ़ लाई और आप यहाँ पे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी को थोड़ा सा हमें बता दें। First of all, thank you so much for inviting me to this session. It's an honor to be here. I started my journey as a bachelor's in maths, stats, economics. Then I did my master's in economics. I was working. I started working for Citibank. I did my internship with Citicorp Investment Banking. Then I had joined like Grindays Bank. That was my first job. I worked there for 3 years. Then ABN AMRO, World Bank, and like a lot of other organizations in my career. So I've been working with multinational banks and like local banks as well. So I've got a 25 plus years of banking journey, commercial banking, retail banking, investment banking, asset management industry. Then I switched on the legal side. I had done my law degree and I started, pursuing my career on this side. And I liked, studying international law and like learning about different laws of the different countries of the world. And I started doing my LLM. I did my LLB, then LLM. Then I got this opportunity of writing my thesis on ICC. I'm the first student from Pakistan who went to Hague for my research. I did my research on ICC, International Criminal Court of Justice. And I got this opportunity of meeting a lot of influential people. उस ज़माने में डोमिनिक ऑनगुइन की वहाँ पे ट्रायल्स चल रही थी, तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अटेंडिंग द ट्रायल एज वेल. आई विजिटेड ICJ, वहाँ की लाइब्रेरी में भी कुछ अर्से रिसर्च की, एंड देन आई केम अप विद माय बुक एंड इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर ये तो माशाल्लाह एक बड़ी लंबी आपकी अचीवमेंट्स की कहानी है। लेकिन ये कैसे लगा आपको कि बैंकिंग से एकदम आपने स्विच कर लिया लॉ की तरफ, और फिर लॉ में भी जब आप गई तो वहाँ भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी? Actually, I liked, studying law about different countries and about, different laws. International law मुझे काफ़ी interesting लगता था. And I thought of, doing my PhD also on this topic actually. So I'm in the process of registering for PhD with 2-3 universities. I'm under discussion with some professors there. So learning about the countries, whatever is happening in the world, this situation है geopolitically आपके सामने है, जो wars and so much happening, or emerging economies coming, and superpowers trying to be influential and powerful and taking over the world. So it's quite interesting what is happening and challenging. अच्छा, आपने अच्छा खासा काम स्किल डेवलपमेंट में भी किया, तो क्या कहेंगे कि आर वी अप टू द मार्क comparing more developed countries and nations today? So मैं समझती हूँ कि जो populated countries हैं, like India, like Pakistan, like Nigeria, इसमें 60-70% जो आपकी population है, that is youth. इस वक्त आपकी skill development is the most important thing. मुझे लगता है degree से ज़्यादा important इस वक्त skill development. I'm also fortunate to join as a board of academics for this organization in UAE, which is working on talent, skills and talent. It's called Talent of Endearment, UAE. Achha. And I'm in the board now, and I've been engaged with them for past 4 years as a voluntary. I mean, I like helping the community. So now they've made me a part of the family and their community, where 60% of them are from GCC. I'm the only one from Pakistan. They're working on the startup financial aid program as well for students. Students who are coming up even with ideas. They want to work on that ideas. वो कहते हैं idea भी आया उसको list कर दो.
उनकी ये थिंकिंग है. सो 35-40 days का प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट का, where they encourage students to learn about all what is happening, about blockchain, about meta, about AI, about, I mean, उनकी 35 days की training is very extensive, mainly based on the technology. सही. वो कहते हैं बच्चा जब जॉब पे जाए पहली दफ़ा तो उसके अंदर स्किल्स डेवलप्ड होनी चाहिए, वरना वो होता क्या है कि वो स्विच करता रहेगा और अनसर्टन रहेगा और अनस्टेबल रहेगा, सेटल नहीं हो पाएगा जॉब पे जाके. उनकी ये वो है थॉट प्रोसेस है. So I'm trying to bring them to Pakistan as well. I've had sessions with different universities. वहाँ यहाँ पर उनको उनका समझ नहीं आता. मैंने एक सेशन भी किया था कराची यूनिवर्सिटी के लिए. एग्जाबिस्ट में भी एक टॉक थी, वहाँ भी मैंने इनका जिक्र किया था. फिर मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ मिलकर इस पर कर रही हूँ कि हाउ वी कैन ब्रिंग दैट culture, that skill development program to be introduced in our universities in Pakistan as well. So like Dr. Abid Bedas and uske chairman is also on LinkedIn if you want to search on him. He's an amazing person. I mean, he's done some amazing research on skills and on the skill set, and he's also into the recruitments, etc., for young individuals. So इस पे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकें मैं talentofinterment.ae करूँगा करके, तो यकीनन. it's हाँ, amazing. If you डेफिनेटली can do डेफिनेटली. something with हाँ. me on this, I'm open to ideas. I'm open to platforms for like strategic partnerships. I can help universities and students and all to be partner with them and do something like them, etc. क्या आपको लगता है कि ग्लोबल स्किल गैप Of course, sir. है बहुत ना, बड़ा बहुत स्किल बड़ा गैप गैप है. है और हाँ. उसकी वजह से होता ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में मुश्किल हो जाती है. हाँ. आपका अब वो ज़माना नहीं है कि आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं. अब so many different opportunities are coming up, like especially after the like sustainable development goals and all moving in the whole world. इस पर सस्टेनेबल बेस्ड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर हो रही हैं और लोगों की डिग्रीज ही नहीं है. आपको हार्डली को मिलेगा सस्टेनेबल डेवलप पे उस पर कुछ डिग्री ली हुई है उसने. बाहर तो उस पर डिग्रीज आना शुरू हो गई हैं, बट यहाँ पे अभी उस तरह का फोकस नहीं है. और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एज लाइक हेड फॉर साउथ ईस्ट एशिया, इकोसोलिस, विच इज़ वर्किंग इन इजिप्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और इस पे बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड है ऑन हाउ टू इम्प्रूव द पॉवर्टी साइड, हाउ टू वर्क ऑन वाटर इंसैलिनेशन, हाउ टू वर्क ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग on like renewable energy side. जितने भी 17 goals हैं उस पे they're focused and they're coming up with different ventures and different startups, and उनके students तक involved in different universities. Then they have a course on sustainable development. They have a degree being offered on sustainable development. This is something which is emerging, which everyone is talking about globally. एग्रो फॉरेस्ट्री पे बहुत अब डिग्रीज आने लगी हैं. पहले एग्रीकल्चर की डिग्रीज नहीं थी. अब एवरी अदर कंट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स एग्रो फॉरेस्ट्री, टुवर्ड्स कार्बन क्रेडिट, टुवर्ड्स एग्रीकल्चर साइड. तो अब एग्रीकल्चर पे भी बहुत फोकस आ गया. इस पे भी अब नई किस्म की टेक्नोलॉजीज, नई किस्म के लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नई किस्म की एग्रीकल्चर की इससे रिलेटेड लाइक रिसर्च स्टडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं भी अफ्रीका में थी. I'm working a lot in the African region. I work on like public-private like partnership like projects in Africa with Kenya, Uganda, Rwanda. So I met their Agriculture Food Authority की जो director है उनसे मेरी मुलाकात हुई. Like she was a female and she was amazing, a very experienced female. She was like, we are looking for our businesses to convert towards agriculture, because we can see a future of Africa and agriculture side. And she asked me if I could add value through my sustainable development theories and researchers and all, and if I can help them advise for their businesses which are coming to the agriculture side. So इस वक्त एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे भी काम हो रहा है. काफ़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो एग्रोटेक और एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइक प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी इंगेज हो रहे हैं. So a lot is happening in emerging economies. दुनिया कहाँ से कहाँ इस वक्त निकल रही है और fields different खुल रही हैं. एक वो typical वो हमारे ज़माने की जो थी, हमारे पास तो कोई इतना एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था, कोई गाइड करने के लिए नहीं था. अब तो काउंसलर्स हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलर्स हैं all over the world. You can take like counseling, and हमारे ज़माने में तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी. एक वही मतलब डिग्रीज थी. मसला ये है कि we need to think out of box. Exactly. हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई इनोवेशन नहीं है एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल्स में. और मैं कुछ अर्सा रहा फेडरल गवर्नमेंट में और यही भेजने का. आई वाज हेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, OEC.
मैं एमडी था वहाँ पे और हम भेजते थे, लेकिन सबसे मसला बड़ा यही था, ट्रेनिंग स्किल्स शॉर्टकमिंग्स थी उनकी बहुत सारी। कोरिया एक ऐसी जगह थी कि जहाँ हम एक बड़ी तादाद में भेजते थे, लेकिन उनका पूरा जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विंग वो इस्लामाबाद में था। वो उन लोगों को यहाँ से ट्रेन करके खुद भेजते थे। Oh, हाँ, तो excellent. जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं तो वो तो एम्प्लॉयर्स, फॉरेन एम्प्लॉयर्स तो देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह का लेबर चाहिए। वो ये नहीं कि यहाँ से जो भेज दें वो चला जाए। True. तो उस वक़्त बड़ा एक इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम बहुत पीछे हैं। यहाँ से सिर्फ लेबर भेजने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन्ड स्किल्ड लेबर, लेबर की हाँ, ज़रूरत स्किल्ड है, अगर लेबर की भेजें भी ज़रूरत तो है। स्किल्ड लेबर। स्किल्ड आप लेबर देखें भेजें। ना, हुँ, सऊदी अरब ले लें, हुँ, दुबई ले लें, इस पर स्किल्ड लेबर अगर हुँ, ज़्यादातर जा रहा है पाकिस्तान, हुँ, इंडिया से जा रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है, हुँ, वही जाके फिर डिफरेंट स्किल्स में इन्वॉल्व हो जाता है। हुँ। अगर यहाँ से प्रॉपर स्किल्ड ट्रेंड लोग जाएँ तो आई थिंक उनको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। अच्छी जॉब जैसे मिल सकती है। आजकल लाइक नर्सेस का है कि ट्रेन नर्सेस नहीं है दुनिया में, और हुँ, हुँ, पाकिस्तान से बहुत नर्सेस हैं जो क्वालिफाइड नर्सेस बाहर जा यूके इस सकती तरफ है। जा रही हैं, बिकॉज वहाँ पे शॉर्टेज है नर्सेस की। तो हुँ, समथिंग विच इज़ नाउ ये एक जिसे कहते हैं ज़रूरत है। हुँ, सो ऑर्गेनाइजेशंस भी इस वक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन आर द एम्प्लॉयज़। हुँ, अब एम्प्लॉयज़ भी एक कहते हैं ना, एक ही जगह पे रह रहे कि भी थोड़ी सी मोनोटनी हो जाती है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अगर डाइवर्स कोई होना चाह रहा है तो इट्स ओके। इट्स ओके। मगर हमारे यहाँ यह थ्योरी कि अगर एक बंदा एक जगह पे है तो यहीं पे अगले 10 साल गुजार दे। हुँ, व्हाई इज दिस? हुँ। इफ they can be यही सबसे बड़ा diversified, if they मसला can है। switch to हाँ। some other area and हुँ, learn about a new skill, why not give हुँ, them a chance? वो हुँ। हमारी जो मेंटालिटी है ना, वो चेंज करने की चेंज करने ज़रूरत की है ज़रूरत है और आप कि सही कह रही हैं। एक मोनोटनी हो जाती है हाँ, कि जो जगह जहाँ बैठ बैठा बैठ हुआ के है। आप जैसे मैंने अपनी लॉ की तरफ क्यों आई, बिकॉज कर ली थी बैंकिंग, आई वांटेड हुँ, टू लर्न समथिंग डिफरेंट, हैव हुँ, सम डिफरेंट स्किल इन मी, हुँ, एंड प्रॉब्ली दिस वाज लाइक वन ऑफ द रीजंस कि मैं थोड़ा सा लॉ की तरफ मैंने अपने आप को कन्वर्ट किया, ठीक है, wanted ठीक to है। do something different. And हुँ, I'm so grateful to Allah Ta'ala that due to the financial experience and now legal, I've chosen the field of like merger acquisitions and हुँ, private equity, which I never thought I will do in my हुँ, life. But this हुँ, is something now I'm engaged with the whole world, and I'm हुँ, engaging with private equity companies and venture capitalists and family offices, and हुँ। working with them not just in Pakistan but all over the ऑल world. ओवर द वर्ल्ड। Like our law firm has presence in 70 plus like countries, and we are associated with different like attorneys and solicitors with them. I mean, हुँ, and कोई भी हमें किसी किस्म की गाइडेंस हेल्प किसी भी एरिया में चाहिए लीगल में, चाहे वो लाइक लिटिगेशन है, आपकी आर्बिट्रेशन मीडिएशन है, आपका बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग है, विच इज़ वन ऑफ द वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट एरियाज राइट नाउ, जिसमें हुँ, लॉयर्स चाहिए कि हुँ। बिजनेसेस बंद हो रही हैं, कोई सक्सेशन प्लानिंग ही नहीं है। सो दीज आर द एरियाज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं और मैं इसमें अपने आप को ग्रो नहीं, नहीं, करना दिस इज़ चाहती वेरी हूँ। गुड। आपकी बातों से लग रहा है कि आपके वर्सेटाइल एक्सपीरियंसेस और जगह-जगह पे काम करना, फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और उसके बाद लॉ को उसके साथ आप अगर इनकॉर्पोरेट कर लें तो इट्स सच अ रिच एक्सपीरियंस यू हैव। अच्छा, ये बताइए कि रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, आईएलओ, डब्ल्यूटीओ, इनके साथ भी कभी कोई बिकॉज काम? यूएन के साथ हम आई वॉज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, आई वॉज अकाउंटिंग एनालिस्ट फॉर द वर्ल्ड बैंक, एंड माई जॉब वॉज टू हायर द कंसल्टेंट्स फॉर लाइक डिफरेंट लाइक अपॉर्चुनिटीज एट द वर्ल्ड बैंक। सो वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा 1.5-2 साल का रहा। हुँ, और यूएन के साथ, यूनेस्को के साथ, यूएनडीपी, काफ़ी हुँ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारी एक इंटरेक्शन रहती थी, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस रहती हुँ, थी। हुँ, और आई थिंक अ लॉट, आई थिंक यूएन इज़ राइट नाउ वर्किंग अ लॉट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट साइड। हुँ, और बीच में उन्होंने कुछ अपने लाइक प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए हुँ, थे, जो हुँ, कि लाइक दे वर गिविंग some sort of financial aid for organizations coming on the sustainable development side, like green energy side, green energy पे हुँ, भी इन्होंने कुछ अभी शुरू किया था। हुँ, तो it's very good कि अब इसकी इम्पोर्टेंस हुँ, खास तौर पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इस पे काम शुरू हो गया है, एंड विद द हेल्प ऑफ यूएन एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जो यहाँ पे काम कर रही हैं यूएन के साथ एज एसोसिएट पार्टनर्स, वो इनकरेज कर रहे हैं लोगों को हुँ, टू कम अप विद डिफरेंट स्टार्टअप्स हुँ, एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर फोकस मोर ऑन सस्टेनेबल गोल्स एंड stuff like that. So I think a lot is happening, especially in the emerging economies. क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव्स पे, ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स पे बात करते हैं। क्या समझती हैं कि इफ़ेक्टिवली हो रहे हैं पाकिस्तान को देखते हुए? ट्रेनिंग के मौक़े हैं बाहर?
जी सर, पर्सन? बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है। हमारे पास स्किल्ड कितने लोग हैं जिनको हम सऊदीया, दुबई, कतार इन एरियाज़ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वेयर वी कैन हेल्प पीपल ट्रेन ऑन डिफरेंट एरियाज़ एंड लाइक टेक्नोलॉजी साइड पे स्पेशली बहुत काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग व्हिच इज इमर्जिंग। लाइक अभी रिसेंटली मेरे एक लाइक क्लाइंट है सऊदी अरब से, उनकी कॉल आई एंड ही वाज लाइक वी आर लुकिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स from like Pakistan who can lead one of our projects here in Saudi Arabia. So he asked me, because I'm on the recruitment side as well, so he asked me if you have some resources which are fully equipped on AI. अब स्पेसिफिकली एआई, एआई पे, अब हाँ। एआई पे काम बहुत हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्पेसिफिकली एआई पे डिग्री लेके 5-6 साल का एक्सपीरियंस ऐसे लोग जरा कम है। तो आई एम हेल्पिंग देम फाइंड द अच्छा, राइट गुड, गुड। पर्सन फॉर दैट। इट्स इक्विटी फर्म, और उनको हर कोई एआई की तरफ जा रहा इन्वॉल्व है, हो रहा जा है, जो रहा है। नहीं भी था। ब्लॉकचेन पे बहुत काम शुरू हो गया, पीपल आर कमिंग अप विद ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स एंड स्टफ। अभी दुबई से 2-3 कंपनीज उन्होंने मुझे अप्रोच किया दैट हम ब्लॉकचेन में आ रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अ कंपनी एंड वी लुकिंग फॉर योर सपोर्ट एंड रेजिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टफ। सो इस पे अब बहुत अवेयरनेस और चीज़ें आ रही हैं। फिर आ यहाँ रहे पे हैं। एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो एआई पे काम कर रही है। अब जितनी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ हैं भी, टेक्सटाइल हो गया, कोई भी सेक्टर निकालें, उनको भी थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाने की ज़रूरत है कि व्हाट दे लैक, वेयर दे नीड टू गो, व्हाट इज़ द 5 to 10 ईयर स्ट्रैटेजी। सो अब थोड़ा सा इस तरफ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और लोगों को इवॉल्व हो रही समझ आ रहा है। हैं। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग विद देम एज अ कंसल्टेंट एंड आई हेल्प businesses turn towards AI. अच्छा, सही। Yeah. अच्छा, ये जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थ्रू प्लानिंग कमीशन, तो आपका कभी पड़ा उनके साथ कोई ऐसा सर इंटरेक्शन? मैं आपको बताया था, मैं पाकिस्तान में तो कम ही काम कर रही कम ही हूँ। काम करती सस्टेनेबल है, पे मैं हाँ। इजिप्ट पे कर रही हूँ। हाँ। अफ्रीका में एक ऑर्गेनाइजेशन है प्लग एंड वर्क, वेयर आई एम अटैच्ड विद देम एज एसोसिएट पार्टनर, सो आई हेल्प देम, आई मीन वी लाइक वर्क टुगेदर विद डिफरेंट बिजनेसेस इन अफ्रीका जो कि एग्रो की तरफ आ रही हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ और कार्बन क्रेडिट की तरफ और एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइक डेयरी बिजनेसेस की तरफ। इस पर डेयरी पे बहुत काम अफ्रीका में हो रहा है। तो मैं मेनली इन्वॉल्व हूँ उस वक्त इजिप्ट और अफ्रीका की साइड पे। पाकिस्तान पे मैंने सच में हाँ, सस्टेनेबल पे इतना काम नहीं किया। काम मैं नहीं किया। आपसे हाँ, सही। अच्छा, कोई मेंटोर आपका सारी पूरी जर्नी में आपका? जी सर, Barrister Shaida Jameel, she is my अच्छा। professor as well, and she's the person who pushed me to do this thesis. उन्होंने मुझे, जब मैं जा रही थी यूरोप, तो मुझे याद है मैं गई मैम के पास, तो हम उस पर जो टॉपिक चूज कर रहे थे कि क्या टॉपिक मैं लूँ, तो मैम suggested that go to ICC, do research on like critical analysis on ICC, and go there and stay there and just do this. She wanted to do this and she could not do this, and she wanted me to pursue this. So she's like a mentor, and बुक्स she guided पढ़ती me. हैं? I love reading books. कोई ऐसी बुक जो आपने रिसेंटली पढ़ी हो? सर मतलब मैं रिसेंटली का अफ्रीका मतलब? गई थी, हाँ। तो वहाँ पे एक उस लायंस क्लब के सेकंड इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर मनोज शाह। डॉक्टर मनोज शाह ने अपनी एक बुक लिखी है, 1 in a Million. He is अच्छा। a mentor as well, and he's अच्छा, running a गुड। hospital in अच्छा, Kenya, and he's गुड। also with the Lions Club, और उनके Lions Club की participation is out of this world. So मैं अफ्रीका में काफ़ी उनके साथ एंगेज रहती हूँ, लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ। तो उनकी वो बुक मैं कोशिश करती हूँ, when I go for some talks या कहीं, तो 1 in a पढ़ती Million, हैं। it's quite interesting. I wish I can मैं लाती अपने साथ, अगर मुझे पता होता ये टॉपिक निकलेगा। और उस पर तो अपनी लाइफ जर्नी पूरी बताई है कि वो कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पे अब इस वक्त वो क्या उनकी लेवल है, वो कैसे उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स और चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। एंड उसके अलावा कुछ राइटर्स और ऑथर्स हैं, जैसे रॉन कॉफमैन इज ऑल्सो वन ऑफ माई मेंटोर्स। रॉन यहाँ पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने, मुझे याद है, HBL में कोई 20-25 लोगों को ट्रेन किया था, और उनका एक अपलिफ्टिंग का प्रोग्राम है, करियर अपलिफ्टिंग, और मैं इस पर बहुत टॉक करती हूँ। आई गो टू यूनिवर्सिटीज टू टॉक ऑन हाउ यू कैन अपलिफ्ट योर करियर, हाउ कैन एज अ स्टूडेंट अपने आप को भी से कैसे तैयार कर सकते हैं आप टू मूव टूवर्ड्स योर करियर। सो इनफैक्ट मेरा अभी लाइक 19th को एक सेशन है यहाँ लॉ कॉलेज है, उसके साथ on like career uplifting. अच्छा, अच्छा, ये जो यहाँ कराची में है? जी। अच्छा। So I do talk a lot on this, and रॉन की बुक्स मैं बहुत फॉलो करती हूँ। उनकी 3-4 बुक्स हैं जो मैं अपने साथ रखती हूँ, और उसमें से कभी कोई कोटेबल कोट निकाल लिया, कभी कोई जर्नी निकाल ली, कभी कोई सक्सेस स्टोरी।
सक्सेस स्टोरी बेस्ड बहुत चीज़ें हैं उनकी, तो चीज़ें वो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो अच्छा, म्यूज़िक का है कोई उससे शौक आपका, या बस काम ही जी करती सर, हैं आप? म्यूज़िक भी पसंद है। किस तरह इनफैक्ट का? मेरी अपनी भाभी इज़ सिंगर, माय ब्रदर सिंग्स, Rachel Vickerji, she also comes on Coke Studio. अच्छा, She's अच्छा, a great singer. So अच्छा। then हमारी अपनी क्योंकि फैमिली में अब सिंगिंग का है, और हुँ, ऑफ कोर्स राहत फ़तेह अली ख़ान, हुँ। उनकी मुझे आवाज़ बड़ी पसंद है। आतिफ़ असलम, आई आतिफ लिसन टू असलम, हिम अ लॉट। What kind of movies do you like to see? ज़्यादा सस्पेंस एंड सस्पेंस वाली, क्राइम्स एंड एक्शन। मुझे थोड़ा क्राइम्स की हुँ, तरफ इंटरेस्ट है, तो मुझे हुँ। थोड़ा क्राइम्स बेस्ड मूवीज़ और क्राइम आपकी लॉ बेस्ड डेली से उसका प्रोग्राम्स। है ताल्लुक, उसका कोई है ना? कि आपने जी, बस हाँ। आईसीसी पे, बिकॉज़ हुँ, ज़्यादातर वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड और इस हुँ, पे ही ज़्यादातर उसकी थ्योरी है आईसीसी की, जो अभी तक हुँ। अफ्रीका पे ही जो उन्होंने ट्रैवलिंग में काम कोई किया। शौक, ट्रैवलिंग? आई लव ट्रैवलिंग, या ट्रैवलिंग, या, ओके। एंड आई वांट टू कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर। जहाँ आप नहीं गई या जाना चाहती हैं? जो मेरी ट्रैवल बकेट में है, बहुत सी जगह है। मुझे जापान जाने का बहुत शौक है। दिस हुँ, इज इन माई ट्रैवल बकेट। बचपन से शौक है मुझे हुँ। जापान जाने का, अब तक चक्कर नहीं लगा। चाइना, आई वांट टू चाइना का, विजिट चाइना। हाँ। चाइना इज इन माई माइंड। I've traveled Europe, I've traveled US, I've traveled अफ्रीका। अफ्रीका, जीसीसी बहुत ट्रैवल किया। हमारी रेजिडेंसी थी 3 साल दुबई की, तो उस वजह से हुँ, काफ़ी ट्रैवल हुआ। देन मलेशिया दिस साइड, हुँ, थाईलैंड, बहुत ट्रैवल्स हुए हैं। नाउ दीज आर द कंट्रीज जो मैंने अपनी हुँ। पॉकेट में रखी। रशिया मुझे शौक है जाने का। रशिया, सेंट्रल हाँ, एशिया सुना ठीक है, है। बहुत काम हाँ, शुरू हो सेंट्रल गया एशिया सेंट्रल बहुत है, एशिया में। सही कह रहे हैं आप। ट्रेड पे बहुत काम शुरू हो गया, हुँ, और ताजिकिस्तान, हुँ। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दिस पाकिस्तान, साइड। हाँ, सही है। अब ट्रेड पे, पहले हुँ, ट्रेड नहीं थी इन हुँ, एरियाज में, हुँ, बट अब I've heard a lot of trade related activity has started between हुँ, Pakistan and Central Asia, हुँ, which is encouraging, which is like वेरी मोटिवेटिंग। और इमर्जिंग हुँ, इकोनॉमीज में अब जितनी भी हुँ। इमर्जिंग में है, जैसे इजिप्ट पे मैं काफ़ी काम कर रही हूँ। मेरा ट्रैवल एक ऑफिशियली भी लगना है अभी इजिप्ट का। अच्छा, गुड। इजिप्ट क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स नाउ, एंड हाँ, चाइना ब्रिक्स, इज हाँ। ऑल्सो इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन हुँ। इजिप्ट नाउ, तो वेयर डू इजिप्ट यू में भी। सी दिस सीपैक जो है उसपे कुछ सीपेक थोड़ा दोबारा एक्टिव हुआ है, विच इज़ गुड। हाँ, अभी मैं थोड़ी-सी बीच में कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद रिडंडेंसी में थी अटेंड उसमें, की थी, हाँ। जिस पे वाटर पे काफ़ी टॉक हुई है, जो हुँ, इंडस वाटर ट्रीटी पे और वाटर हुँ, पे जो IS हुँ, उन्होंने KCFR वालों ने की थी, तो इट हुँ, वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई मेट लॉट ऑफ पीपल देयर हु वर टॉकिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड हुँ, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी फॉर पाकिस्तान एंड हुँ, ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे लग रहा है काफ़ी हैपनिंग हो हुँ, रही हैं चीज़ें हुँ। इंशाल्लाह। क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो जर्नी है ना आपकी, दिस इज़ वेरी inspiring, थैंक यू सर। for people like me or for people, younger people. लाइकवाइज सर, Honestly, we learn honestly. from people like you. No, no, thank you very much. Any last thing that you may like to say to, Uh, younger people, or Yeah, of since course. we talk about I youth? would like to say, sir, that youth should come up with something to build their own brands. They should be a brand. Mm, They should work on their own self and how mm, to mm, like build themselves as a brand. mm, So brand building पे मैं काफ़ी काम कर रही हूँ, mm, और मैं इस पर टॉक भी बहुत करती हूँ कि अपने mm, आप को कैसे अपलिफ्ट करके एज अ mm, ब्रांड आप आएँ। mm. और एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन जस्ट स्टार्ट। Mm. आजकल 8 साल का चाइना का बच्चा कौन से ऐप्स निकाल के बिलियनर बन रहा है, तो वो Billionaire बन रहा है, हाँ. एज इज नॉट अ Mm, regardless of age. mm, Come up as your own brand. You should be a brand, like mm, Rabia Omer, like Saeed Saab. They should be a brand. mm. So मुझे ऑनेस्टली मेरा बड़ा अभी दिल करेगा कि आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में बहुत सारी और बातें करें जो sure, anytime. यूथ रिलेटेड हों, क्योंकि आपके इतने माशाल्लाह एक्सपीरियंसेस हैं, इतनी लर्निंग प्रोसेस से आप गुजरी हैं, देखा है, काम कर रही हैं, क्योंकि दिस सेशन इज़ नॉट इनफ। Thank you. तो हो सकता है हम आपको आगे किसी सेशन Anytime. में दावत दें, आपको तकलीफ बिल्कुल करनी sure, sir. Would पड़ेगी। love to. इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। Thank you थैंक यू so वेरी much. मच। थैंक Thanks यू, a lot थैंक for यू। inviting me.